Bismillahirrahmanirrahim. Satkan Education Services. Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you all? I hope you all are good and safe at home. Okay, students. Today we are going to learn about singular plural. Of all, student, mention date. First of all, student, mention date here and mention HW. HW. It's your homework. Write down HW. Today's topic is singular plurals. Singular plurals. Singular means one, singular mean one, and plural means more than one. More than one means एक से ज़्यादा. Singular means one, एक. Plural means एक से ज़्यादा. More than one. First spelling is HAT, hat. Okay, students, read with me. HAT, hat. This is one hat. What is the plural of hat? H A T. We write S. Hats. Hats. MAT, mat. MAT, mat. What is the plural of mat? M A T. We write as mats. We write as mats. P A N. Now tell me, यहाँ क्या आएगा बेटा? क्या ऐड करेंगे हम? Yes, S. We add S. Pens. Now, next spelling is FAN, fen. F A N S, fence. BUN, bun. B U N S, barns. BUNS, barns. Now the last spelling is tin. TIN, tin. Repeat after me. TIN, tin. What is the plural of tin? Tell me, students. Yes, wow, very good. TIN, tins. HAT, hat. Learn with me. HAT, hat. MAT, mat. PAN, pen. FAN, fen. BUN, burn. TIN, tin. What is the plural of hat? HATS, hats. MATS, mats. PANS, pens. FANS, fence. BUNS, buns. TIN, we write as tins. I am telling you again, singular means once and plural means more than one. एक से ज़्यादा. जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसके आगे हम मेंशन करते हैं S. S. Learn these spellings. Okay, students? Now, beta, take out your English verb book. All of you, take out your English verb book. Open page number 77. Open page number
77. First, mention your date. Mention your date and write CW. Mention your date and write CW. And mention the day. Mention the day. Today our topic is singular, plural. Singular, plural. Single means once. Single means once. I will give you an example. This is one pencil. This is one pencil. And if you add two pencils, this is plural. This is plural. We add s. We add s. जब एक से एक पेंसिल होती है तो वो होता है सिंगुलर. जब हम किसी एक चीज़ के साथ एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं तो वहाँ हम मेंशन करते हैं एस. क्या ऐड करते हैं? एस. दिस इज़ प्लूरल. दिस इज़ प्लूरल. ओके. What is this? Hat. What is this? Hat. H-A-T. Hat. Repeat after me. H-A-T. Hat. What is this? Hat. H-A-T. Hat. This is singular. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हैट की. यहाँ कितने हैट हैं? एक हैट. ओनली वन हैट. अब हम यहाँ हैट देखेंगे. H-A-T-S. हैट्स. यहाँ वन से ज़्यादा हैट की बात हो रही है. इट मीन्स यहाँ हम मेंशन कर देंगे एस. यहाँ हम मेंशन कर देंगे एस. H-A-T-S. hat. H-A-T-S. hat. What is this? What is the spelling of mat? M-A-T. mat. M-A-T. mat. What is the plural of mat? M-A-T-S. mats. यहाँ कितने मैट्स हैं? यहाँ वन से ज़्यादा मैट है. इट मीन्स M-A-T add S mats. M-A-T-S mats. P-A-N pen. P-A-N pen. It's a singular. It's a single pen. What is the plural of pen? It's P-A-N-S. pens. यहाँ वन मोर देन की बात हो रही है. एक से ज़्यादा की बात हो रही है. यहाँ एक से ज़्यादा पेन है. इट मीन्स वी ऐड एस. P-A-N-S. pens. P-A-N-S. pens. What is the spelling of fan? F-A-N. fan. F-A-N. fan. What is the plural of fan? F-A-N-S. fans. F-A-N-S. fans. What is the spelling of bun? B-U-N. bun. B-U-N. bun. Now tell me, what is the plural of bun? Yes, very good. Bun. Okay, now
B-U-N-S, buns. What is the spelling of buns? B-U-N-S, buns. Okay, come to the next spelling. T-I-N, tin. What is this? T-I-N, tin. ये क्या है? सिंगुलर. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वन टिन की. इट मीन्स सिंगल टिन. कम टू द प्लूरल. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ टिन? T-I-N. We add S. It means one more tin. एक से ज़्यादा टिन है. Tins. Yes. Repeat after me. T-I-N-S, tins. T-I-N-S, tins. H-A-T, hat. What is the plural of hat? H-A-T, we add S, hats. M-A-T, mat. What is the plural of mat? M-A-T-S, mats. P-A-N, pen. P-A-N, pen. What is the plural of pen? P-A-N-S, pens. What is the spelling of fan? F-A-N, fan. F-A-N, fan. What is the spelling of fans? F-A-N, we add S. It means one more fans. F-A-N-S, fans. B-U-N, bun. B-U-N, bun. What is the spelling of buns? B-U-N, we add S. Yes, buns. Buns. T-I-N, tin. T-I-N, tin. What is the spelling of tins? T-I-N, we add S. Tins. Tins. अच्छा बच्चों, आपको ये अपना वर्क स्पेलिंग्स रीड करनी है, लर्न करनी है. अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैच करना है. हैट, H-A-T, हैट. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ हैट? यस, मैच. पुट द पेंसिल ऑन द डॉट एंड राइट दिस. हैट, hats. What is this? Mat. M-A-T, mat. What is the plural of mat? Yes, put the pencil on the dot and match the mat. M-A-T-S, mats. P-A-N, pen. Where is pen? This is the pen. This is the pen? No. This is the pen. This is the pen. P-A-N-S, pens. Fan, F-A-N, fan. Where is fan? This is fan. This is fan? No. This is fan? No. This is fan. Yes. This is fan. B-U-N, bun. Yes. Match the buns. T-I-N, tin. Tin. ओके बच्चों, आपको इस तरह से ही वर्क करना है. उसके बाद टेक आउट योर कॉपी. बेटा, ये काम आपको अपनी इंग्लिश वर्क बुक पेज नंबर 77 में करना है. एंड डन HW
in your copy and learn it. Again, learn it these spellings. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.